Good morning, students. Chapter number 8, Visual Basic 2010 Express. So, yesterday we discussed about one practical program. In this program, we insert marks in 5 subjects, then find out total marks and average. Now I am going to discuss in case you are saving your file. The extension of the VB form is .vb. क्लियर? जब भी आपने विजुअल बेसिक को में फॉर्म को सेव करना है, जो फॉर्म की एक्सटेंशन होगी दैट इज .vb. क्लियर? और आपके पास तो आई एम टाइपिंग हियर द एक्सटेंशन ऑफ विजुअल फॉर्म that is .vb. तो रिमेंबर दिस. तो मैं एक इस चैप्टर को मैं क्विकली एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ. हमने डिस्कस किया था कि विजुअल बेसिक इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन May 1991 and it is a event driven programming language. And in this, we have 3 modes. One is design mode, run mode, and the break mode. Run mode, design mode, when we create the program, it contains design window and the coding window. So run mode, when we execute the program. जब भी आपने program को execute करना है, there are 3 methods. One is start debugging button available in toolbar. Clear? Second, press shortcut key F5. Third method, click on debug, click on start debugging option. Clear? By using this, you can execute Visual Basic program. Next is, there are different components of Visual Basic window. Here is at the top, title bar, menu bar, toolbar, toolbox. This is a form. There is your solution explorer. Then there is a property window. Okay, these are the there is a status bar at the bottom. Are the different component of Visual Basic window. Next is, yesterday I discussed the when we install Visual Studio. Okay, Visual Studio is a Microsoft company. In this studio, we can use different programming languages. Different programming languages like C++, C++, C sharp. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टाइप कर रहा हूँ C++, then C sharp, there is a F sharp. ठीक है, then there is a JavaScript is there. JavaScript, Python. So different type of programs, different type of programming languages you can use by using Visual Studio. Then another term is Visual Basic .NET. So yesterday I discussed the .NET is a technology that is used for creating window, then web and mobile applications. Okay, Visual Basic में we can create only window applications, but in Visual Basic .NET आप web applications बना सकते हो. You can create window applications. Window application is softwares जो window में चलेंगे operating system में. Then you can create also mobile applications. So all of these things we can create in the Visual Basic. .NET. Then we discussed
कि देयर इज ए वन प्रोग्रामिंग वन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेटा क्या कौन सी होती है? जिसमें आप वेब पेजेस क्रिएट करते हो। तो in this there is a one language, scripting language, that is called PHP. Its full form is PHP hypertext preprocessor. Clear? So this is the full form of PHP, and it is a scripting language, and it is a very famous for creating web pages. Now, one question for you, beta. Anmol, unmute yourself. Yes, sir. बेटा हमने डिस्कस किया था कि HTML is a scripting language. Clear? Yes, sir. Yes, we can create web pages. Then what is the requirement of PHP? Why we are using PHP or other languages? ओपन सोर्स लैंग्वेज है ये। ओपन सोर्स तो है बेटा, आप इसको ध्यान से सुनना इसका आंसर। When we use HTML, then in HTML it is a static language. Static language का मतलब है in this we can't do perform the function of a programming language. जैसे आपके पास लैंग्वेज है विजुअल बेसिक, इसमें हम दो नंबर को ऐड कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई एडिशन, वी कैन अप्लाई सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इन एचटीएमएल वी कांट डू दिस। फॉर दिस वी नीड advanced scripting language like PHP, ASP, JavaScript like this. And more clear? Yes, sir. ठीक है, तो हमें that's why there is no any alternative of HTML. तो ये PHP लैंग्वेज जो भी लैंग्वेजेस होंगी ये HTML में एम्बेडिंग होती है उनकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी टाइप द HTML कोडिंग लाइक HTML, ठीक है, लाइक उसके बाद हेड टैग के अंदर हम एक यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट में हम लिख देते हैं लैंग्वेज, ठीक है, लाइक लैंग्वेज जो भी आपने यूज करनी है लाइक जावास्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम कोडिंग लिखते हैं इनसाइड द स्क्रिप्ट, ठीक है। वी टाइप द कोडिंग एंड देन वी क्लोज स्क्रिप्ट टैग लाइक, ठीक है। तो इसमें HTML वी आर यूजिंग, inside the HTML we use PHP, coding of PHP or coding of JavaScript or coding of other programming language. Concept clear, Anmol? Yes, sir. Okay, so that's why PHP is just like other programming language, but it is a scripting language. Okay, here we can perform mathematical functions, logical functions. We can apply. Yes, there is one doubt. Yes, Prabal. सर जैसे हम VB यूज कर रहे हैं, सर हम VB की कोडिंग HTML में यूज कर सकते हैं? नो बेटा, इसमें बेटा VB की कोडिंग आफ्टर यूजिंग वी कैन कन्वर्ट इट, क्योंकि आपके पास उसमें विजुअल स्टूडियो में जावास्क्रिप्ट भी है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं उसमें। क्लियर? तो उसके लिए फॉर वेबसाइट्स वी नीड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक स्क्रिप्टिंग like ASP, PHP, then ASP.NET, then there is a JavaScript, VB script, then these are the languages. Trouble clear? Now next is different if you want to create project a form, you know that click on file, click on new project, then click on window form, ठीक है, तो उस तरीके से आप न्यू फॉर्म ऐड कर सकते हो। Now next is
In Visual Basic, there are different properties. So in your book, there are some properties given in page number 89. In the case of labels, we have name property to change the name of your label. It is useful when we create the coding. Okay, तो coding में हम जो भी use करेंगे, we use name of a control. Then core color is text color. Okay, then text, if you want to change the text of your label, then visible. So you want to visible or hide करना चाहते हैं या visible करना चाहते हो label को. In the case of text box, we have name, text, font, lock, then max size, max length, multi-line. Okay, in the case of command button, but it is called button. Okay, तो बटन भी कहते हैं इसको. Name, text and font. Okay, तो हम क्या करेंगे अब इन प्रॉपर्टीज को एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे. So we are going to implement these different properties, okay, one by one. So for this, I am going to click new project, window form application. Then a form is created. Here I am going to insert one label. So here is a label. ठीक है, तो अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज की थी, we can change the label name. Label name is given in the beginning. ठीक है, otherwise in the coding we will have to write label one dot. Okay, but I'm just making a simple program. Okay, first I am going to change its font. तो इसका मैं font भी change कर रहा हूँ. 1 minute बेटा. So I'm going to increase its font size. Okay, this is your font. Okay. Now, if you want to change the font, there is a font properties here. Font में आपको font style you can apply, font size. Okay, these things we can apply. Then name I have already discussed. You can change its name. It is applicable in the time of at the time of coding. Then next property is here in the case of your name, forecolor. Forecolor is your color of your text. ठीक है, तो आप इसको select करके there are number of colors are given here. Suppose I selected blue, तो आपका text किस color का हो गया? Blue color का हो. तो forecolor, this is the color of your text. Background color is the color of your background. ठीक है, it may be image or maybe color. ठीक है, but forecolor is the color of your text. Next property is then visible. Okay, so I select here it, and property is visible, so false. Okay, so now स्क्रीन के ऊपर अगर मैंने इसको false कर दिया, ठीक है, तो आपने देखो स्क्रीन के ऊपर आपके पास when you execute the program, the label is hidden. Okay, it means visibility is false. You don't want to display. At the time of designing, it is applicable, it is visible, but at the time of execution, it is false. Okay, so here is true or false. Okay, students, concept clear? Okay,
इसके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, देखो तो वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम. I insert one button here. Okay, I inserted the button. I increase its size by using font property. So I'm taking a size here 24. तो इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया लेबल 1 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स. ओके, अब मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया. ओके, देखो बेटा, जैसे बटन के ऊपर प्रेस किया आपके पास टेक्स्ट हाइड हो गया. आई एम अगेन रनिंग दिस प्रोग्राम. आई क्लिक ऑन द बटन, टेक्स्ट हाइड हो गया. कोडिंग इज, हियर इज कोडिंग, लेबल 1 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स. ठीक है, तो लेबल 1 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, दिस इज द कोडिंग. ये देखो बेटा, दिस इज द कोडिंग. So it means you can hide or you can visible any control by using visible property. तो उसके आगे आपको लेबल 1 या लेबल 2, दिस इज द नेम. अगर आपने इस लेबल को नेम दे दिया ए, ओके, तो आपने यहाँ पे क्या यूज करोगे, ए डॉट विजिबल. स्टूडेंट्स, कंसेप्ट इज क्लियर? Okay, good. Now next is, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक और प्रोग्राम बनाते हैं. ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल प्रोग्राम यू कैन क्रिएट. लेबल 1 डॉट 4 कलर. So for this, there we will have to use system.drawing.color. There is a little bit coding is required here. तो उसके बाद, क्योंकि this is out of your syllabus, so we discuss name, for color, text and visible. Next is text box. Name, text, font, maximum length, multi-line. So अब हमने one by one we are going to discuss text box property. So here I inserted text box. I increase its font size. Okay. Now, if I execute this program, so here I can type the data in one line. Okay. For example, 143 JP Nagar, Jalandhar. So text is in one line. Okay. So if you want to get the input in multi-line,
So select it, and then there is one property that is called multi-line false. तो इसको आपने ट्रू कर देना है. तो multi-line true. Okay. So when we execute this program, okay, यहाँ पे you type something. 1 minute. So now I drag this. So you can type the data in multi-line. Multi-line means multiple lines. Like so this is your multi-line. So true or false. This depend on the size of your control. So आप इसको increase decrease कर सकते हो. Next is here is max length. So here is max length is 32,767 characters. तो आपने यहाँ पे max length ले ली. Suppose it is 5. Now I am going to execute this. So I type here SSBPS. After that, I am not able to type. This is due to the max length. इसका मतलब मैं 5 characters से ज़्यादा टाइप नहीं कर सकता, because in a property in maximum size, max size, I have given 5. Clear? So by default it is 32,767, but you can decrease it. Concept is clear? Yes, Bani, it's clear, beta? Sir. Okay, beta. Next property is name. So we can give the name of the text box. By default it is text box 1, text box 2, like this. Text. अगर आपने text box के text, otherwise 1 minute, beta, 1 minute. I am showing also text box. तो by default text box में कोई भी data visible नहीं होता. ठीक है? Text property, there will be no any data here, but you can type, for example, enter data. Okay. तो आपने एक text type कर दिया. So when you will execute this program, so it will by default it is inserted. It means default value we can insert by using text property. So next is in text box font. So font, by using font you can increase the size of your text, you can change its style, you can apply it bold italic like this. Okay. Then there is maximum length we have discussed. Okay. So it is a length, maximum length. After that you can't enter the data. By default it is 32,767, but we can reduce it. Multi-line, if you want to get the data in multi-lines, okay, then you take multi-line equal to true. Then I execute this program. So this is visible, your text box is visible here. Now next property is that is logged. By default logged is false. मैंने इसको true कर दिया. Then I run the program. So whenever it is logged, I can't enter any data. I am trying to type the data. ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास locked property में when it is locked property, this property determine whether you can move or resize control. तो यहाँ पे बेटा move और resize 1 minute बेटा 1 minute. तो आपने देखा बेटा, ये देखो कि in designing window there is a very small lock in the top of your text box. This indicates that you can't move it. You can moving
button. You are moving label, but you can't move text box because you locked the text box. The properties text box the locked आपने इसको true कर दिया. If it is false, it means you can move this. Here locked, here false. Now you can move. So this property is also of text box. The label. If it is locked is true, then you can't move this. Okay. So if it is false, you can move it. In the same way, in the case of buttons, locked property false means you can move, and if it is true, it means now you can't move this. तो लॉक प्रॉपर्टी आप टेक्स्ट बॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, बटन्स में अप्लाई कर सकते हो, लेबल्स में अप्लाई कर सकते हो. अनमोल क्लियर? Yes, sir. Okay. Next is in the case of command buttons, but means buttons, the properties are name, means name of your button. By default, it is button 1, button 2, button 3, like this. Text is in text that is visible in button. Here is a button 1. ठीक है, तो आप इसको चेंज करके sum, add, you can insert any type of text. Font, if you want to increase the font size or font style, ठीक है, then you can use font property. So all of these properties, if you have any doubt in this, any doubt in these properties? Okay. Okay. Okay, students, if you want to close your project, click on file, click on close project. ठीक है, और अगर आपने प्रोजेक्ट को सेव करना है, क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन सेव फॉर्म 1. ठीक है, तो आपका फॉर्म सेव हो जाएगा विद डॉट एक्सटेंशन विद डॉट वीपी. यू कैन ओपन द प्रोजेक्ट by clicking on open project. Clear? So you will have to give the location where your file is saved. So these are the chapter number 1, chapter number 8, Visual Basic 2010 Express. So we discussed all the different topics given in this chapter. चलो एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं. ठीक है, I will enter the age of a person. Okay, after that I will display whether he or she can enter, he or she can cast the vote. ठीक है, voting right है कि नहीं है? So for this I will have to use if condition. ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाने लगा हूँ. तो here is new project window. ठीक है, then I inserted one label. In label I type text is enter age, then font property, in order to increase its size, font property, then I inserted one text box, here is my text box. If you want to delete any control, click on that control, select the control and press delete button. Now
in the text box, I change the size, font property. I'm taking 18. Now I enter one more text box, label, sorry, label 2. I increase its size. And in text box, I delete the label 2. So here is a text box is here, but without any text. ठीक है, text नहीं है यहाँ पे दिया हुआ. Now I inserted one button. ठीक है, आप you can view it by selecting it, this one. ठीक है, this is your text box too. I am going to insert one button. So here I change text. Show message. Then I increase its size by using font property. Now I double click here. Now type the coding. Coding is dim age as integer. ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एज. नाउ एज इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट. बेटा दैट विल बी इन ए स्ट्रिंग फॉर्मेट, तो आपको यू विल हैव टू यूज val function to convert that into value. Now use here one condition. ठीक है, if age greater than equal to 18, then label 2 dot text is equal to eligible for voting. Okay, then else label 2 dot text not eligible for voting. तो मैं यहाँ पे कोडिंग टाइप डिस्प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर. तो आपके पास एज में आपने एंटर कर दिया द टेक्स्ट यू हैव एंटर इन टेक्स्ट बॉक्स 1. in case age is greater than 18, then in label 2 text will be displayed eligible for voting, else लेबल 2 में आएगा नॉट एलिजिबल. इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट चलेगी बेटा, दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगी. एनी वन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस. I click on run button, starts debugging. I enter 45 messages eligible for voting. I enter 12 messages not eligible for voting. So this program is clear, beta? Yes, quickly give the response. Only Anmol is giving. Anve ko I think clear nahi hua. Okay, good. What about Gundeep, Gurnoor, Karan, Veda, Mehakpreet?
Prabal, Raghav, Punya, Rohit, Shreya, Tanushka, Harmandeep. You are not giving any response. Okay, students. Now, next period, Friday, we will discuss some more program of Visual Basic. Okay. Now I am going to close the meeting. Take care. Bye, beta.